Hi guys, so welcome to the third part of the number systems. Today we are going to learn about irrational numbers. So in the last two videos we have learned about all the natural numbers, whole numbers, integers. Then we have learned about rational numbers and their properties and all the things that are associated with rational numbers. We have understood that rational numbers can be expressed either as a terminating decimal or a non-terminating repeating decimal. So anything that can be represented as a terminating decimal or a non-terminating repeating decimal is a rational number. And we have learned some of its properties. We have learned how to convert into decimal form to p by q form, and again from p by q form to decimal form. We have seen this. I'm sure after seeing this much part, you people have done your exercises. So now we are getting into something, the another form of number, which is called an irrational number. Now irrational number, as you can see, we represent rational number as q. So irrational numbers are those which are not rational. होता है ना, एक घर में हमेशा, घर में हो, ऑफिस में हो, स्कूल में हो, दोस्तों में हो, देयर इज ऑलवेज कुछ लोग होते हैं जो एकदम इरेशनल होते हैं, बात समझना ही नहीं चाहते हैं. सो दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दोज पीपल जो लोग हर बात समझते हैं. सो that's why they are called complementaries of each other. So irrational number is marked with a C, while rational number is Q, irrational number is QC. Now see, these representations are very general standard. कोई ज़रूरी नहीं है कि यही होना पड़ेगा. कोई किसी ने दुनिया में एकदम फाइनल लॉ नहीं निकाला है. But more or less these are followed for the ease of understanding. So we will also stick to this for some time. So now we are going to irrational numbers. Okay. Now in irrational number, first let us understand what is a irrational number. Well, an irrational number is that number which cannot be expressed as a terminating decimal or a non-terminating repeating decimal. So basically, in other words, जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है. तो हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स. से फॉर एग्जांपल 0.10110000111100. सो देखो ये चलते ही रह गया. ये भी तो एक नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इट कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. So this is called a irrational number. So any of these kind of numbers, say 2.414414444144 sorry 41, कुछ कुछ चलते रहेगा. So इस तरीके से कोई भी तरीके का जो नंबर होता है, these are irrational numbers. So ये one तरीके का हुआ. Say this is, say you can say type 1. Then there is type 2, which is a square root of any number which is not any natural number which is not a perfect square. So square root of a, where a is rather ऐसे थोड़ी लिखते हैं, sorry. A, sorry, एक सेकेंड. Right. A belongs to natural number and
A is not a perfect square. जैसे फॉर एग्जाम्पल परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है, व्हाट आर द परफेक्ट स्क्वायर्स, अगर आप देखोगे तो परफेक्ट स्क्वायर्स अगर तुम पूछोगे, हम लोग बोलते हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर. सो अगर इनको छोड़ के आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो और उसको यहाँ पे डालो तो फिर वो आपका is an irrational number, like root 2, root 3, root 5, root 6, root 7, root 8. Root 8 is basically 4, 2 root 2. This is equals to 2 root 2. So like that. So it will keep on going. Okay, root 11. So these are all the second time. Similar second type of irrational numbers. Then we have type 3. Type 3 is cube root of all a. Same thing, a belongs to natural number and a is not a perfect cube. So you can basically find out any number which is nth root. So in that way you can say that nth root of any number a, where a is not a perfect what I would say, the perfect exponent of n, basically not exponent, which is not a perfect n factor, nth factor of a natural number. So nth factor or exponent of a natural number. I hope you get my point. So अगर क्यूब रूट है तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, मान लो फोर्थ रूट है तो परफेक्ट फोर नहीं होगा. A to the power 4 means a is not exactly some natural number b to the power n. Sorry, यहाँ नहीं लिख सकते. Where ये वाला लाइन अगर हम ठीक से देखें, let me write it, frame it properly for you, where a belongs to a natural number and a cannot be expressed as a perfect nth power of a natural number. So a is not equals to some b to the power n. So this will become an irrational number. This is the right representation. Okay. So this is one. Then we have so इसके लिए अगर आप देखोगे कि for example 8, cube root of 8 is equals to 2, but अगर आप 9 बोलोगे cube root of 9, it is a irrational number. This is irrational number. Okay. Similarly, now we go to type of type 4. Type 4 will be like pi. Pi is again an irrational number. So there are a few things, but pi हम लोग extensively we hold. Pi is a very unique number. So this we call an irrational number. Pi is exactly not equal to 22/7. We normally consider pi as 22/7, but that is an approximation. Pi is not exactly 22/7. Okay. So these are the various types of irrational numbers. Now we will go to another part, that is what are the properties of these irrational numbers. So let us
understand some of the properties. पहला सबसे important property जो है, these are called these all irrational numbers are commutative, associative and distributive. ठीक है, सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। मतलब अगर आप ए के साथ बी को जोड़ेंगे और बी के साथ ए को जोड़ेंगे, दे आर द सेम। एसोसिएटिव मतलब इज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब पहले अगर आपने ए और बी को जोड़ लिया, उसके बाद सी को जोड़े, तो जो एडिशन का वैल्यू आएगा, पहले अगर आप बी और सी को जोड़ लिया फिर ए को जोड़ा, तो सेम वैल्यू आपका आएगा। एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। मतलब पहले आपने बी प्लस सी को जोड़ा, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू ए और बी को मल्टीप्लाई किया, ए और सी को मल्टीप्लाई किया, दोनों को जोड़ा, तो फिर वो आपका सेम आया। सो दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज। फिर ये मान लो आपका 1 है। फिर दूसरा प्रॉपर्टी पे जाते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि ये बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका दो ये बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है कि Q1 प्लस Q2 मतलब दो इरेशनल नंबर्स को अगर आप जोड़ोगे तो वो एक इरेशनल नंबर ही आएगा। इट कैन बी इरेशनल, इट कैन बी इरेशनल। सिमिलरली अगर दो इरेशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा, दे नीड नॉट बी irrational. There, it is not necessarily irrational. It may be, it may not be. So, not necessarily irrational. ठीक है, सो सेम थिंग फॉर ऑल दीज थिंग्स। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। लेकिन लेकिन अगर आप एक रैशनल नंबर के साथ एक इरेशनल नंबर को जोड़ोगे, सिमिलरली एक रैशनल नंबर के साथ एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, या फिर एक रैशनल नंबर के साथ एक इरेशनल नंबर को प्रोडक्ट करोगे या फिर उसका डिवीजन करोगे, तो ये सारे इरेशनल होंगे। दीज आर ऑल सम वे इरेशनल। ठीक है, दे आर ऑल इरेशनल। सो कोई भी इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, सो अगर मान लो इसको बहुत सिंपली तरीके से बोला जाए, मान लो अगर a इज ए रैशनल नंबर and root b is a irrational number, then a plus root b, a minus root b, a root b and a by root b are all irrational numbers. ठीक है, where a and b are two natural numbers. ठीक है, एक और पॉइंट आप जान लो इस टॉपिक पे, दैट इज बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे मान लो ए एंड बी अगर दो नेचुरल नंबर्स हैं, सो ए प्लस बी बाई टू इज अ रैशनल नंबर lying between a and b, and root ab is a irrational number lying between
A and B. ठीक है. So these are the kind of things जो आपको irrational number में जानना है. Now before we proceed to the irrational numbers के बाद वाला topic, that is real numbers, we would like to work on some of the एग्जाम्पल्स जो कि नंबर वर्क, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थियोरी कर रहे हैं. सो अब हम लोगों को थोड़ा सा ये करना चाहिए, थोड़ा सा नंबर वर्क्स और थोड़ा सा चीज़ें, कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए इरेशनल नंबर्स का, बिकॉज इरेशनल नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स. और आगे चल के आपको रियल नंबर्स समझने के बाद आपको इरेशनल नंबर को कैसे ग्राफिकली निकालते हैं वो हम लोगों को एक देखना पड़ेगा, एक एक चीज़ हमको सीखना है. फिर हम लोगों को ये भी सीखना है कि रैशनलाइजेशन क्या होता है. So there is we have irrational numbers, and irrational numbers are going to be with you for a long time. So uh, for a long time it is always going to be a part of it. So so we have never dealt with the concept of irrational numbers earlier. Most of you have not, maybe in the last year or एक दो साल ही last किए हो, but this is something which you really need to understand thoroughly. So हम लोग थोड़े से problems करते हैं. For example, एक सवाल है कि let's do some examples. We are doing a few examples, not many. बाकी आप लोग कर लोगे. My idea is to make a video that clears your funda of whatever topic we are discussing. So in that way अगर आप देखा जाए तो let us do some examples, numericals that will help us in doing that. So for example एक है कि √2 और √3 के बीच में मान लो हमको 3 irrational numbers घुसाना है. ठीक है. So first we have to understand what is the value of √2. So normally आपने पिछले क्लासेस में देखा होगा √2 is 1.41 421 something 356 dot dot dot, and √3, these are two irrational numbers as you know. So 1.7302, this is 1.7302, not 02, sorry, 7320. तो हम लोगों को इसके बीच में मान लो दो रैशनल नंबर और दो इरेशनल नंबर घुसाना है. सो लेट अस पुट two rational numbers and two between 2 √2 and √3. ठीक है. सो कैसे घुसाएंगे. सो अगर आपको ये दिख रहा है कि ये है 1.4 एंड 1.73, सो यू कैन वेरी क्लियरली से कि अगर आपने कोई भी एक नंबर लिया, मान लो 1.5 लिया, दिस इज प्योरली अ रैशनल नंबर बिकॉज इट इज़ अ टर्मिनेटिंग प्रॉपर डेसिमल. और आपने एक नंबर लिया मान लो 1.6, ये दोनों ही आपका रैशनल नंबर हो गया. तो इट इज़ जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, कोई रूल या लॉ यहाँ पे दिमाग लगाने का वैसा अलग से कुछ नहीं है. यू बेसिकली सी कि आपके पास √2 का वैल्यू है 1.4142 और आपके पास है 1.7320. तो इन दोनों नंबर को लेके आप क्या करोगे. देखो सर, आप लोग एज अ स्टूडेंट आप लोगों को एक बात समझना होगा कि कुछ चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज यू आर इन मैथमेटिक्स, लाइक द वैल्यू ऑफ पाई और √2 और √3 और √5. सो यू कैन गो टू द इंटरनेट, आई एम श्योर यू द बुक्स और द गूगल में जाके ऑल द स्क्वायर रूट्स का एंड क्यूब रूट्स का वैल्यू याद कर लो, बिकॉज द मोर यू ग्रो you will be needing to remember them. These should be just at your fingertips, so that helps a lot. So यहाँ पे we see that. अब we can arbitrarily make an irrational number which is starting with something in 5 or 6, and we make them irrational. Say 1.5012300400050005 07 dot dot dot, ये हो गया एक irrational number. And 1.616616, sorry, 6661 dot dot dot, ये चलता रहेगा. So these are the two irrational numbers that we can always say that it is there.
So this is there. Then ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल पे जाते हैं. सो दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स. ऐसे सवाल आते रहेंगे, तो आपको हमेशा जब जैसे रूट का सवाल आएगा कि इन दोनों स्क्वायर रूट, दोनों रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 के बीच में ये नंबर डालो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर द few 1 point means whatever be the decimal value to a certain number of a, you must be knowing that. Thereafter you should be able to put just by looking at the numbers arbitrarily in between them. There is no fixed rule. Like जब हम लोग rational number डाल रहे थे, तो there were 3 rules. You know, if you remember, there is one is m1 plus m2 by 2. So rational number है, दो है q1 plus q2 by 2. That was one idea. Then we had an idea that दोनों q को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स को n plus 1 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दो. That was another idea. And there was like q2 minus q1 by n plus 1 से divide करके we will be making something called d, and that differentiator को हम लोग add करते करते जाएंगे. q1 plus d, q2 plus d, q1 plus d, q1 plus 2d, q1 plus 3d. So that was while putting a few rational numbers in between two rational numbers. But when it is irrational numbers, you do it arbitrarily. Okay. तो ये हो गया. नाउ मेरे पास कुछ एक सवाल है. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द देयर आर फ्यू नंबर्स. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जैसे √3/81. देन वी हैव 2/3 √6. देन वी हैव 4.1276. And we have 6.834834 dot dot dot, and we have √1.44. So हमको पता करना है कि इसमें से कौन रैशनल है और कौन इरेशनल है. So let's take the first one, this one. So √3/81. So अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, it is 1, it is 27, right? Which is equals to square root of 1/3 into 3 is equals to 1/3. Of course this is, यहाँ पे एक √3 है, so therefore this is irrational number. Okay, so this is irrational. हो गया. दूसरा वालों को देखते हैं. ये यहाँ फिक्स खत्म हो गया, तो हमको मिटाना पड़ेगा क्या? या the page cannot go down as it says. Okay, so let me clear this. Let us find number 2. 2/3 √6. This is equals to 2/3 into √2 into 3. So of course √6 itself is a irrational number, product of a rational and an irrational. So this is definitely a irrational number. Let's see, 4.1276. This is of course a terminating clear complete decimal. So this is not a irrational number. Similarly, if you see, these two are, this is a proper repeating decimal, 6.834 bar. So this is not a, yeah, because anything which is a terminating or non-terminating repeating is a rational number. So वो irrational नहीं है. Now last one we have is root under. तो ये सब हमने कर लिया. Now we have
स्क्वायर रूट ऑफ 1.44. अगर आप देखोगे you can define it by 144 by 100 which is 12 by 10 whole square का root which is 12 by 10 which is 1.2. So this is definitely a rational number, not an irrational number. So far so good. I think we have got a more or less detailed understanding of what is, starting from number system, what are the irrational numbers, आपका कितने टाइप के होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव. इट इज नॉट नेसेसरी दैट sub addition, subtraction, multiplication and division of two irrational number is irrational, but addition, subtraction, multiplication and division of a rational and irrational number is always irrational. ठीक है, ये हमने समझ लिया. दो कैसे डालना है ये भी समझ लिया. सो अगर आप बोलोगे कि डिफरेंस, give an example where two irrational numbers whose difference is a rational number. So for example, 6 plus root 3 is one irrational number and 6 minus root 3 is another irrational number. अब इन दोनों को ऐड करो. This is q1, this is q2. ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, q1 plus q2 equals to 12. So this is becomes a rational number. So this is not there. Then so इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो. मान लो प्रोडक्ट है, इसका भी प्रोडक्ट आप करोगे तो इट विल बी 6 स्क्वायर माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 36 माइनस 3 दैट इज 33. अगर आप इसका और इसका प्रोडक्ट करोगे तो ठीक है. राइट. सो और बताइए और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे. आई थिंक दिस इज प्रिटी गुड. कुछ क्वेश्चंस हैं ट्रू एंड फॉल्स में. लेट अस जस्ट गो थ्रू देम फटाफट. द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज rational, absolutely true. Sum of two irrational numbers is irrational, not necessarily true, so this is false. The product of two rational numbers is always rational, absolutely true. The product of two irrational numbers is irrational, again not necessarily true. जैसे इसमें नहीं हुआ, या मान लो दो नंबर है 6 रूट 3 एंड रूट 3, तो दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, 6 रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा 6 इंटू 3, दैट इज 18. So that will not be a irrational number. Similarly, the sum of two rational number and an irrational number is, sum of a rational number and an irrational number is irrational. Absolutely true. The product of a non-zero rational number and a irrational number is rational number. एक नॉन जीरो रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो वो रैशनल होगा, बिल्कुल नहीं, वो इरेशनल होगा. So this is false. Every real number is a rational number. Not every real number is a rational number, because we are coming to this very soon. What are real numbers? The rational or irrational, natural, सबको मिला के होता है आपका real number. So not every real number is a rational number. But yes, every rational number is a real number. Every irrational number is also a real number. So we'll go to this as the next chapter. Then every real number is either rational or irrational. This is absolutely correct. तो रियल नंबर्स क्या होता है, जो कि इधर रैशनल है या फिर इरेशनल है. ठीक है. एंड पाई इज इरेशनल बट 22/7 इज रैशनल, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7, but pi is approximately equal to 22/7. So these are the very correct things. I think this is good for us so far. Now I'm cleaning this, and we have already learned natural numbers, whole numbers, rational numbers. Sorry, there is an integer बीच में है. We have got the integers, then we have rational numbers, and now we have the irrational numbers. अगर आप पूरा यूनिवर्सल सेट देखोगे, मान लो जिसमें आपका है नेचुरल नंबर्स, जीरो को ऐड कर दो विद जीरो, तो ये हो गया होल नंबर्स, होल नंबर. और उसके साथ अगर आप इसको भी ऐड कर दो तो फिर ये हो गया आपका इंटीजर्स, नेगेटिव्स को ऐड कर रहे हो आप.
ठीक है। अब इन सारे नंबर्स आते हैं, इसके साथ फ्रैक्शंस वगैरह को भी ऐड कर देंगे, तो ये सारे हो गए आपके। बाहर नहीं जा सकता, राइट, या सॉरी, ये भी बाहर नहीं जा सकता। हाँ, सी दिस इज वेरी देखा, फिर से बाहर चला गया। हाँ, ये भी नहीं हो सकता। Why I'm not able to do this? This is your rational numbers. बाकी का जो बचा है ये है irrational numbers. ये प्लेन जो है टुगेदर, ये है रियल नंबर का प्लेन. So this is the world of real numbers. So we'll go to this in the next one. I think that is good. We will now close this particular video here and we will restart it in the next one. Okay. Thank you.